is let's discuss motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. Gravitational force of the earth means gravity. Gravitational force of earth means gravity. You have to tell what is the motion of the object when they are moving under the effect of gravity. We have already discussed the term acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is acceleration produced in any object due to the gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity, and it is denoted with letter G and having value 9.8 meter per second square on the surface of earth. And what is the relation between small g and capital G? It is shown in equation 10.9 that small g is equal to capital G, capital M and capital R square. From this formula, it is clear that small g does not depend upon the mass of the object. Small m पे वो बिल्कुल भी depend नहीं करती है. So here we have to do an activity, or you can say that we will discuss this activity with the help of this formula. Uh, in this activity, it is given that you have to drop a sheet of paper and a stone from the building, from the first floor of the building. Observe whether both of them reach the ground simultaneously. और फिर आपको ये बताना है कि जो आपके दोनों की दोनों चीजें हैं, पेपर, शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन, क्या वो इकट्ठे गिरते हैं अर्थ पे कि नहीं? तो यहाँ पे आप सब बोलोगे कि नहीं, तो पहले क्या गिरेगा? स्टोन. तो फिर आता है क्वेश्चन, व्हाई स्टोन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? आप सब यही बोलते हो बिकॉज द मास ऑफ द स्टोन इज वेरी huge than the sheet of paper, but it's not the reason behind this question. Here is because small g does not depend upon the mass of the object, means जो small g है वो आपके mass of object पे तो depend कर ही नहीं रही है. Whether the object is heavy, whether the object is light, it should reach the ground at the same time, but वो same time पे भी नहीं पहुंच रहा है. Then what is the concept behind this? There is the paper reaches the ground little later than the stone. This happens because of air resistance. This is the main concept behind this, air resistance. और यू कैन से दैट एयर फ्रिक्शन भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है जब आप ग्राउंड की बात करते हो या लीनियर मोशन की बात करते हो? The frictional force is an opposing force which opposes the motion of an object. ऐसे ही हवा में भी क्या होता है? एक फ्रिक्शन होता है, एक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? एक रुकावट होती है जो मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब वो मूव करते हैं तो उनको भी वो अपोज करता है एयर फ्रिक्शन. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन. जो रेजिस्टेंस जो ऑफर करती है एयर पेपर को वो ज्यादा होता है रेजिस्टेंस ऑफर टू द स्टोन, बिकॉज जो सरफेस एरिया होता है ना पेपर का वो ज्यादा होता है. द एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा उस पर क्या लगेगा? आपका एयर रेजिस्टेंस, उतना ही ज्यादा उस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगा. एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द stone. If we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate. लेकिन अगर हम यही एक्सपेरिमेंट एक ऐसे ग्लास जार के साथ करें जिसमें से सारी की सारी जो हवा है वो निकाल दी जाए, जो पेपर और स्टोन है दे फॉल एट द सेम रेट. दोनों के दोनों एक ही साथ नीचे गिरेंगे, बिकॉज वहां पे एयर रेजिस्टेंस क्या है? अब है ही नहीं, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस जो है पेपर पे ज्यादा फील हो रहा था और लेकिन किस पे कम हो रहा था? स्टोन पे, ड्यू टू देयर सरफेस एरिया. तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाई अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट will reach the ground, like not reach the ground at the same time.
जबकि हम ये बोलते हैं कि स्मॉल g डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप मास का कॉन्सेप्ट नहीं बोलोगे, बिकॉज वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो मास है, जो स्मॉल g है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या रहेगा? आपका एयर रेजिस्टेंस। एंड सिमिलर यू कैन से दैट अ क्रम्बल्ड शीट ऑफ पेपर एंड अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को क्रश कर देते हो, उसको गोल किसी बॉल में कन्वर्ट कर देते हो, और एक आप बिल्कुल प्लेन शीट ऑफ पेपर लेते हो, अनक्रम्बल्ड शीट, तो कौन सा पहले पहुंचता है ग्राउंड पे? आप बोलोगे क्रम्बल्ड शीट ऑफ पेपर, बिकॉज क्रम्बल्ड शीट का जो पेपर है, क्रम्बल्ड शीट ऑफ पेपर जो है, उसका एरिया क्या हो गया आपका? कम। उसका एरिया कम, तो उस पर रेजिस्टेंस भी क्या लगेगा? कम लगेगा। एंड जिसका एरिया ज्यादा है, उस पर रेजिस्टेंस भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में। ठीक है, तो this is the like concept based question which can be asked on the basis of the formula g is equal to gmm upon r square. And here the next is motion of the object under free fall. You have learned about the equations of motion in chapter 8, that is मोशन चैप्टर। वहां पे आपने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v square is equal to u square plus 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, s is distance. All the symbols have their usual meaning, but these equations will be transformed into some another equation during free fall. We know that an object experiences an acceleration during free fall, and the acceleration due to gravity is independent of its mass. We have discussed right now the object जो होता है, that is independent of its mass. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. According to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower in Italy to prove the same. As g is constant near the earth, all the equations of uniformly accelerated motion is valid when they are replaced, the a is replaced by g. ठीक है, तो क्या होता है आपका? यहाँ पे क्या होगा? जो इक्वेशंस हैं, वहां पे जो a है ना, a की जगह पे हम क्या डालते जाएंगे? g. And the s is replaced by h. S is replaced by h because in linear motion distance traveled होता था, लेकिन during free fall अब क्या होगा आपका? s is converted into h, height में बदल जाएगा वो। तो v square is equal to u square plus 2as। तो यहाँ पे अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी आपकी? when there is a case of free fall, जब free fall का केस होगा, इक्वेशन यही लगेंगी, लेकिन v is equal to u plus gt। a की जगह पे क्या लिखना है अब हमें? gt, and g here represents acceleration due to gravity having value 9.8 meter per second square, and s is converted into h. Then the second equation is equal to h is equal to ut plus half gt square. Where there is a, you have to replace it by g, and where there is s, you have to replace it by h. V square is equal to u square plus 2gh. V square is equal to u square plus 2gh. a की जगह पे g लगा दो, s की जगह पे h लगा दो, where u and v are the initial and final velocity, and h is the height covered, and g is acceleration due to gravity. Yes, remember that during free fall there are two cases: whether the object is dropped from a height, or you can throw an object in the upward direction. तो दो directions होती हैं, एक upward and एक downward. When you are dropping the object like downward, and when you are throwing the object in upward direction, then upward direction. In that case, you have to take g negative when you are throwing it in upward direction. You have to take g positive when you are throwing it in the
पॉजिटिव डायरेक्शन मींस ऊपर से नीचे जब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो जी को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। ये देखो, द एक्सेलरेशन ए विल बी टेकन एज नेगेटिव एज व्हेन इट अपोजेस द मोशन, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है और आप उसे ऊपर की तरफ भेज रहे हो, तो अपोजिट मोशंस हो गए ना। तो this will be the equation of motion of free fall. Discuss. Let's discuss example 10.2. Read the numerical carefully and write down the given physical quantities. A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let g is equal to 10 meter per second square. What is its speed on striking the ground? What is its average speed during the 0.5 second? How high is the ledge from the ground? एक कार है जो वो लेज से गिरती है कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रही है, तो यानी जी क्या लोगे आप, पॉजिटिव। वट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी वी निकालना है आपको। जब भी कोई चीज ड्रॉप होगी ना तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा रेस्ट लाइक जीरो रहेगी आपकी, लेकिन जब किसी चीज को आप ऊपर फेंकोगे तो एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है। तो सॉल्यूशन में यू कैन चेक टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus gt। तो u को क्या कर दिया हमने, जीरो। v is equal to a क्या हो गया आपके पास, 10 इंटू 0.5 सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी फर्स्ट तो आपका सॉल्व हो गया। एवरेज स्पीड आपको याद होगा इन फर्स्ट इन चैप्टर मोशन, एवरेज स्पीड इज हैविंग फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, and one more formula is given, that is initial velocity plus final velocity divided by 2. Here distance and time, total time was not given, that's why we have applied the formula v plus u divided by 2. 0 plus 5 meter per second divided by 2 is equal to 2.5 meter per second. Then the distance traveled s is equal to half a t square, half into 10 into 0.5 second square, हाफ इंटू 10 इंटू 0.25 सेकेंड स्क्वायर, आप उसका स्क्वायर करोगे तो s की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.25 मीटर्स। Thus, its speed on striking the ground 5 meter per second, average speed during the 0.5 second 2.5 meter per second, height of the ledge from the ground 1.25 meter per second। height इन्होंने निकाल ली ना कि h is equal to ut plus half, अब एक ही जगह पे क्या डाल दिया हमने, जी टी स्क्वायर, देन हाइट विल बी द आंसर। Based on these small equations, there is example 10.3. An object is thrown vertically upwards. When there is a case of vertically upwards, तो आपको initial velocity given होगी, but आपको final velocity 0 लेनी होगी। Height given है 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards. यानी u आपको निकालना है and the time taken by the object to reach the highest point, और कितना टाइम उसको ऊपर तक पहुंचने में लगता है। हाइट गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो दे रखा था कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अगर कहीं किसी इक्वेशन में नहीं दे रखा तो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको अपने आप ही लेनी है बिकॉज इट्स अंडरस्टूड दैट g इज हैविंग वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। And again, if there is the upward motion, then it will be taken as negative. So first v square is equal to u square plus 2gh। v square आपका 0 होगा, u square आपको कैलकुलेट करना है, a g आपको पता है, s आपको पता है। You will solve, you will get the value v is equal to u is equal to 14 meter per second square।
एंड नेक्स्ट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. टाइम निकालना है. v पता है आपको, u पता है, g पता है, t निकालो. v is 0, u is 14 and minus 9.8 meter per second square into t. T is equal to 1.43 second. Thus, initial velocity is 14 meter per second and final velocity is 0 and time taken is 1.43 second. Next questions. You can do these questions in your notebook. What do you mean by free fall? Very simple. When an object falls freely under the effect of gravity alone. What do you mean by acceleration due to gravity? The acceleration produced in an object due to gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity. And we will discuss mass and weight in the next lecture.